स्थानिक लोकांनी हांगा आवाज उठयल्लो की डान्स बार चालू आसा आनी तेजी कॉग्नायज घेवन ब्लीच पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना कळून आयलें की बिल्डींग आहा जी रिक्वायर्ड परमिशन आसा ती ना. अकॉर्डिंगली तेजे पंचनामा रेकॉर्ड केलो आनीक जे कायद्याच्या नुसार करपाक जाय प्रोसिजर तो फॉलोअप करून पंचायतीन हायर ऑथॉरिटीक धाडून दिलो आनी आमी तेका पंचायतीन डेमोलिशन नोटीस धाडली. जेन्ना डेमोलिशन धाडली तेन्ना ती डेमोलिशन डायरेक्टेड पंचायतीक चॅलेंज जाली आनीक डायरेक्टेड पंचायतीन चॅलेंज जावन नंतर अशेंच जी डेमोलिशन ऑर्डर आसली ती तशीच पडून उरली. डायरेक्टेड पंचायतीन डायरेक्टरान ऑर्डर पास केले आनी तेंचे जी अपील आशिल्ली ती डिसमीस केली. देन ओनर ऑफ दी premises went to district court also that appeal dismissed and whatever the panchayat issued that demolition order was in force. So accordingly we started the process of demolition squad and deputy collector gave an order to demolish the said structure. These are all clubs, man. Okay. All have got bar and restaurant license. And they all so it's basically night club. No, actually, what so was it's the a night reason club. behind that कि इतना अगर लीगली अगर चल रहा है तो डेमोलिश करने के ऑर्डर because of the structure. नहीं ये गाड़ी में जाएगा गवर्नमेंट का आदमी निकाल रहा था गाड़ी because of the structure illegally था or the business was going illegally inside the structure the business illegally चल रहा था. All the clubs they are running in, they are all legal. So There's nothing illegality between the clubs. क्या क्या परमिशन आपके पास थे? The only thing what we did not have was the occupancy certificate certificate of the panchayat.